Hello students, class 11 physics, chapter is work, energy and power. Topic is dimensions and units of work. हमें dimensions लिखनी है पहले, उसके बाद वर्क के different types के units हमें डिस्कस करनी है. तो सबसे पहले हम dimension लिखते हैं. As we know that work is equal to force into displacement, right. Now this dimensions of work, इसको रीड करते हैं. dimensions of work is equal to फोर्स की डायमेंशन आप जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू m. तो दिस इज m into lt minus 1, lt minus 2, दिस इज फोर्स. एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए L, तो देयरफॉर ऑन सॉल्विंग दिस इज m L2 t minus 2. तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क. नाउ दिस देयर आर, हमें यूनिट्स डिस्कस करनी है. तो देयर आर यूनिट्स के लिए देयर आर two types of units of work. There are two types of unit of work. Number one, absolute units of work. Absolute units. Absolute के अंदर number one is SI unit. SI absolute unit क्या होगी? SI absolute unit is this 1 joule. Work की SI absolute unit is 1 joule. Now we know that this work is equal to F into S into cos theta. Work is equal to this. Now this work is, suppose this 1 joule here, and force is 1 Newton, and this displacement is 1 meter into cos 0 into this cos 0. Now this is equal to 1 Newton meter. 1 joule is equal to 1 Newton meter. Now hence this 1 joule can be defined as this 1 joule, the work done is said to be 1 joule when a force of 1 Newton displaces the body. 1 Newton displaces the body through a distance of 1 meter, through a distance of 1 meter in the direction of force. हमारा वर्क 1 joule होगा when a force of 1 Newton displaces the body through 1 meter in the direction of force. So this is the absolute SI unit. Now B is Caesius unit. Caesius unit is वर्क की हमें absolute Caesius unit चाहिए. तो this is 1 arg. Now again we know that this work is equal to F into S into cos theta. Or this work here, this 1 arg, and is equal to this
फोर्स की हमें सीजियस यूनिट चाहिए। यहाँ पर फोर्स की सीजियस यूनिट 1 डाइन, दिस इज 1 डाइन, एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए दिस इज 1 सेंटीमीटर, एंड दिस cos 0, so this is equal to 1 dyne centimeter. Hence work done is said to be 1 erg when a force of 1 dyne, this force 1 dyne displaces the body through a distance of 1 centimeter in the direction of force. Here this angle is 0, therefore हम कह रहे हैं यहाँ पर कि फोर्स किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 1 डाइन का यदि फोर्स हमारा 1 सेंटीमीटर बॉडी को डिस्प्लेस करता है in the direction of force, then the work done is said to be 1 erg. So these are the two units, SI unit and this CGS unit in case of absolute. Now number 2, gravitational units. Gravitational units, and these units are also known as practical units, practical units. Now there are also two types. This A part is SI unit. SI unit क्या होगी? This is 1 kilogram meter, and this is written as 1 kg meter. We know this W is equal to F into S into cos theta. W की जगह पर हम 1 kg मीटर यूज कर रहे हैं, तो दिस इज नाउ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स चाहिए हमें, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, एंड दिस इज 1 kg F into displacement is 1 meter into cos 0. Now hence work done is said to be this 1 kg meter when a force of 1 kgf displaces the body through a distance of 1 meter in the direction of force. So this is SI unit. Gravitational SI unit is 1 kg meter, and this is 1 kilogram meter कहें या 1 kg meter. तो 1 kg meter is equal to this force की हम 1 kgf लेते हैं. This is displacement is 1 meter and this cos 0. तो 1 kg meter is that work
जब एक फोर्स हमारा 1 kg F का फोर्स बॉडी को 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस करता है. नाउ नंबर टू CGS unit. This CGS unit is this is 1 gram. This is 1 gram centimeter और शॉर्ट में लिखते हैं GCM. We know this work again same. This is Fs cos theta. So this is 1 gram centimeter is equal to, and this force की यूनिट रखनी हमें F, this is gravitational unit CGS के अंदर. तो this is 1 gram F and displacement is 1 centimeter and this is cos 0. Hence work done is said to be 1 gram centimeter when a force of 1 gram force displaces the body through a distance of 1 centimeter in the direction of force. तो ये हमारी these are the different types of units हमने डिस्कस किया. नंबर 1 इज एब्सोल्यूट यूनिट एंड नंबर 2 ग्रेविटेशनल यूनिट. एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर दो तरह की SI and CGS. सिमिलरली ग्रेविटेशनल के अंदर दो तरह की यूनिट SI and CGS. Now note that number one 1 joule is equal to 10 to the power 7 earth. 10 to the power 7 earth. So this is the relation between 1 joule and earth. Now number 2 1 kg meter is equal to 10 to the power 5 gram centimeter. And number 3 is this number 2. And this number 3 is 1 electron volt. 1 electron volt is, this is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. So this 1 electron volt is also unit or practical unit of work. So these are the units. Right. Now numerical. A man weighing 60 kgf supports a body of 20 kgf on his head. Calculate the work done by him in moving a distance of 15 meter up the incline of 1 in 10 given G is equal to 10 meter per second square. Here given that this inclined plane, and suppose here this angle alpha, and here this is incline of 1 in 10, means if this height is 1 meter, then this length hypotenuse from here to here should be 10. That is, here given that this sin alpha is equal to 1 upon 10. This is 1 upon 10 here, right? Now a body
of mass m placed on this inclined plane, the weight of this body mg vertically downwards, and the two rectangular component of the weight of the body are, this is parallel or along the inclined plane is mg sin alpha, and the second component is, which is perpendicular to the inclined plane, is mg cos alpha, and here this is normal reaction on the body by the inclined plane. इस बॉडी को हमें ऊपर मूव कराना है, कितना डिस्टेंस मूव कराना है, 15 मीटर मूव कराना है. देन कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन. तो हियर टोटल मास इज m is equal to this 60 kg is the mass of man plus 20 kg is weight of the body. So this is equal to 80 kg. Total mass is 80 kg. Now we know that this work is equal to होता है, this is F into S into cos theta, और this work is equal to, हमें इस बॉडी को या इस मैन को ऊपर मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, इक्वल टू दिस फोर्स mg sin alpha, इसके इक्वल हमें फोर्स चाहिए. जब ये बॉडी, ये सिस्टम ऊपर, मैन और ये बॉडी ऊपर जा सकती है, तो दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू mg sin alpha, this is mg sin alpha into s into cos theta. फोर्स की जगह पर हमने यूज किया mg sin alpha, क्योंकि ये बॉडी को, इस बॉडी और मैन को नीचे लेकर आने की कोशिश करता है, बट इसको ऊपर चलना है. Therefore this f should be equal to this. F is equal to this into this displacement into cos theta. Now this w is equal to m की वैल्यू हमारी 80, this 80 here, total mass 80, और this is g is equal to here 10 into sin alpha is 1/10, sin alpha is this 1/10 into this s, displacement from here to here is 15 meter, to here this 15. Now this is cos 0, because this force, direction of force and the displacement both are in the same direction. ये फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में हम लगाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी अप द प्लेन है. therefore this angle theta is equal to 0. now this cancel by this, और cos 0 is 1. तो on solving this work is equal to approx 1200 joule. तो this is the answer of this problem. यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था मैन weighing 60 kgf. तो this is the weight, kgf is the unit of force, and weight is also a force. तो this is the kgf. तो इसको हमने चेंज किया, ये वेट है, वेट से हमने मास बनाया यहाँ पर. तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, वेट डिवाइडेड बाय जी. तो इसको हमने जी से डिवाइड किया, तो दिस इज मास इज इक्वल टू 60 ओनली. एंड सिमिलरली हियर दिस 20 इज इक्वल टू 80 kg. ये जानते हैं आप एफ एस cos थीटा, एफ की वैल्यू ये रखते हैं mg sin alpha, एंड दिस एस इंटू cos थीटा. नाउ m is 80 into 10, 1/10 into 15 into cos 0. तो on solving this is 1200 joule. This is answer of this problem. Thank you.